choosing careers abhi to obviously बहुत मुश्किल हो गया है. There's so much diversity and so much, and everybody's like, what should we do? You need to know. You will never know what to do, honestly. It's always going to change, especially in response to um with experience and with how much knowledge, irrespective of किस field की आप gain करते हैं, you construct yourself out of that knowledge. So that will keep changing. What is important to understand two things. एक, कि आप किसके लिए कर रहे हो. And once you have a purpose, once you know that I am going to do things only in this sphere, इन चार चीजों के लिए. Because Allah Ta'ala says that by time सब loss में except for, and what is important to remember is कि Allah Ta'ala ने ये नहीं कहा कि कोई इंसान सिर्फ एक करेगा, so he's not in loss. No, these are four things. These are four things that you have to follow each one of them, because it's एक step combine करता है कि हमारी Okay, I have a success. question, Zaira. Sorry. 4 things. अगर आप 4 चीजों की बात करती हैं, वो 4 चीजें कौन सी हैं? If you can repeat. So it is the exception Allah Ta'ala makes. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. The first is iman. Iman. وَعَمَلُ الصَّالِحِ. صالح अमल. सही बात. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. They called one another to haqq, to truth. Fourth, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. They called one another to sabr. Because as I told you, that it's not going to be easy. It's not like the अगर आसान होता ना, तो the prophets, all of them, the messengers, they would not have suffered. They suffered for that one cause. अल्लाह मियाँ ने हर इंसान को हर काम के लिए देखें चूज किया है ज़ाहिरा. अब किसी की भी एग्जांपल ले लें, आपकी एग्जांपल ले लें, मतलब वही बात होती है कि यू केम एंड देन यू वर जस्ट गोइंग ऑन द टॉप. हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की कुछ एक्ट्रेसेस हैं, दे वेंट टू इंडिया एंड डिड 1 or 2 मूवीज एंड आफ्टर दैट वो तो पाकिस्तान में उनका मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया है कि मतलब क्या कर दिया उन्होंने. तो आप तो वहां पे काम कर रही थी, आपने तो मूवीज उन लोगों के साथ मना की है एंड देन यू चोज दिस पैथ. तो आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल. आई थिंक अल्लाह हैज रिटन सबके लिए जो जिस चीज से करना है. वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन व्हाट इफ इट इज राइट और इट इज रॉन्ग. अच्छा, मुझे ज़ाहिरा आप ये बताओ कि आपके फ्रेंड्स होंगे ना, जो क्लोज फ्रेंड्स आपकी होंगी, जिन्होंने आपको उस दौर में भी देखा होगा जब आप मूवीज करती थी, उससे पहले भी देखा होगा और अभी भी देखा होगा. ठीक है, तो जाहिर सी बात है सब एक साथ सब मतलब आई नो दैट कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो जाहिर सी बात है हमेशा साथ रहते हैं, और कुछ फ्रेंड्स हैं जो रास्ता दूसरी तरफ इख्तियार कर लेते हैं ये सोच के कि ओह शी इज गोइंग क्रेजी और ओके फाइन, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. एंड जाहिर सी बात है मैं तो तुमसे बहुत बड़ी हूँ, तो मैंने तुम्हें कई बार ये बात बताई भी है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ बचपन से अभी तक साथ हैं. हम हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बट दे आर विद मी even right now. Like जब भी कोई लाइव सेशन होता है तो my best friend, her name is Maria, she's always there, no matter I do good or bad. तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था और है? I never focused on it, to be very honest, because see, इसमें हमें क्या लगता है ना, हम कोई छोटी सी चीज छोड़ते हैं या हमें लगता है हमने कमाल कर दी है. But when you realize कि हमको, okay, I'll just think about it, that you need to know, I'm again saying the same thing, but the example of the prophets, the example of messengers, for example, the trials they went through, I'm saying Ibrahim alayhi salam, and jinki story se it really moves you. It really, really, really moves you, because first he actually begins with that, और जिसमें actually बहुत सारा दीन based भी है, जिसे दीन फितरत कहा जाता है या जिसे हनीफ कहा जाता है, कि हमारा ईमान जो है वो उस पे बेस्ड है. इट्स मोनोथीज्म. क्या है वो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या हुआ था, उन्होंने जिस तरह सोचा कि एक आइडल मेरा गॉड नहीं हो सकता, या एक से ज्यादा मेरा, he can only be one god. Oneness of God, yes. And then he looked at the sun and he said that, okay, this is my god. And you think about it, why is it that a person would choose the sun as his god? It could be because you always perceive God to be someone so greater than you. Yeah. Right? And he saw the sun and he thought कि ये मेरे से बहुत बड़ी चीज है शायद. And it's the sustainer of the nature. So many things depend on sun. And he said कि this must be my God. And then the sun set.
and he said, this cannot be my God. Then he saw um, the stars and the moon, and he said, this is my God. And then eventually he again he got confused, and he said, he made this dua कि Allah Ta'ala, if you do not guide me, I'm going to be from the wrongdoers. And then Allah Ta'ala guided him, and then he got to know. But see what we need to realize कि जब इब्राहिम अलैहि सलाम ने ईमान लाया एक रब पे, it was not like boom, he believed, and no, he was tested severely. He got tested. First, he got kicked out of his tribe. Yeah. He got kicked out by his parents. His tribe kicked him out. Imagine, from being this person, you lose your entire identity. But he knew वो किस चीज के लिए कर रहे हैं. He knew कि तौहीद more important है आपकी सबसे ज्यादा चीज. जब आपको पता होता है ना आप किसके लिए वो कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आसपास क्या बोल रहे, कौन क्या बोल रहे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता है. You realize आपका पर्पस कितना बड़ा है. So then he got kicked out. Second trial, he was set on fire. People set him on fire, and he had to bear it patiently. For who? For Allah Ta'ala. Then he was severely afflicted when he was tested कि आप अपनी बीवी को, you have to leave her, and it's not easy to leave your child and your wife, but he did it for Allah Ta'ala because this was a test. Then Allah Ta'ala asked him to sacrifice his son. Just imagine, it's not an easy thing, but he did it patiently. And Allah Ta'ala किसी का ईमान जाया नहीं होने देते, किसी का अच्छे अमल जाया नहीं. इस obviously आखिरत में तो बिल्कुल नहीं होगा. ये तो ईमान है हमारा कि आखिरत में हमारी कोई भी अमल जाया नहीं होगा. But even in this world, so he was just tested, right? And severe tests, इसके बाद एक के बाद एक के बाद एक test, but he only did it for the sake of Allah. And then only because he was with perseverance, he stood on that path of Tawheed. He said, I'm only going to worship one God, and I'm going to take anything and everything that comes for him. Only then Allah Ta'ala said to him, मैं तुम्हें अपना खलील. Allah Ta'ala called Ibrahim alayhi salam his Khalil, यानी एक intimate friend. Imagine Allah Ta'ala calling you a friend. But it's not something that he woke up one day and he got that title. He worked only and only for Tawheed, and only then he got there. And once he got to that path, then Allah Ta'ala said to him, I am going to make you an imam. And who is an imam? Imam is someone who guides. इमाम का लिटरली मतलब होता है जो सामने खड़ा होता है, और इमाम is someone who guides. जैसे मस्जिद में हमारा इमाम होता है, तो अल्लाह ताला ने उनको बोला कि I'm going to make you an imam. And you see in the Quran कि अल्लाह ताला जब किसी इमाम को डिस्क्राइब करते हैं, then Allah Ta'ala goes on to say that why did he make them an imam? How did these people become imam? Because they were patient by our commands. They were patient upon our commands. And they kept commanding with patience. So you need to have sabr. और सब्र की एक बहुत important चीज, सब्र का मतलब हम जब समझते सब्र, हमें लगता है चुप करके बैठ जाना है. Sabr takes a lot of courage. And for an individual, for someone, anyone, anybody who's watching me right here, it could be as simple as fighting to pray salah in the morning. That's your first fight. What is sabr? Sabr is to be patience. को हमें लगता है चुप करके बैठना. Patience is perseverance. It's to keep doing things even though everything around you is going against you, yet you keep doing. That is sabr. And that is why Allah Ta'ala said कि एक दूसरे को सब्र की ताकीद करो. जो सूरत अल-असर की मैं बात कर रही थी, कि एक दूसरे को बताओ कि ये दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली है, कि तुम जितने इस टाइम जुल्म झेल रहे हो, you will reap the benefit one day. And Allah Ta'ala is just. It's not going to be कि आप छोटा सा अमल भी करते हैं कि वो जाया होगा. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करें. आप जैसे दोस्त की बात कर रहे हैं इस टाइम, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अच्छे दोस्त बनाएं. It is very, very, very important. And it is upon us women, जो कि unfortunately हम एक internalized misogyny आ चुकी है, that we look down upon other women so much. We don't help one another. And if we don't help one another, who will? There's a reason. देखिए, हम एक
it's very important to be self aware. और एक चीज जो मैंने देखी है लड़कियों में या जो भी women, some of the conflict and so much of trauma that they go through, they go through it at the hands of another woman. yes. And that's very sad. That's very sad. बट देखो बाज़ औक़ात हम लोग वो गलतियां कर जाते हैं बीइंग बीइंग वुमेन और व्हाटएवर, जो हम शायद बाद में रिग्रेट करते हैं. देखो ऐसा भी तो होता है ना जायरा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम और हमारी जितनी खवातीन इस वक्त हमारे साथ हैं सिस्टर्स, हम लोगों ने कभी किसी का दिल ना दुखाया knowingly unknowingly, बट ये है कि माफी मांग के and then you say, oh, I'm not gonna repeat it to Allah, asking forgiveness from him, and then you keep on going and going and going. So I think like being a mother also, that you need to pick and choose your friends. Yeah. Because देखो मैंने ना जब ये Instagram अभी join किया as a blogger, you remember when I said okay I'm doing it like last year, so I started from food because I was just doing some courses and I had no intentions of growing like my community like this. Alhamdulillah जो भी हो गई है. तो जायरा मैंने जो सबसे पहले बात नोट की कि देखो हम लोग तो टीवी मूवी और क्रिकेट के बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, मीडिया के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो वहां पे तो ये हमारी चमकती हुई दुनिया ही है. वहां हम मतलब आंख ही उन चीजों में खोली गई है ना जहां हम देख रहे हैं. मगर यार जब मैंने इंस्टाग्राम पे आके लोगों को देखा और जब मैंने यहाँ के देखा कि यहाँ कितना मुकाबला है, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि 10 फॉलोअर्स के लिए ना आके 10 मेरे पास 10 फॉलोअर्स आ जाएंगे, मेरे पास 20 फॉलोअर्स आ जाए, मतलब पीपल आर गोइंग क्रेजी. एंड बिसाइड्स दैट जी वो ब्रांड कॉन्शियसनेस इतनी है कि वो जी मैंने गुची लिया हुआ है, मैंने लुई विटॉन लिया हुआ है, मैंने ये लिया, व्हाट आई मीन. तो मेरा ख्याल है कि उस चक्रों में ना आप अच्छे फ्रेंड्स ही नहीं बना पाते हो बाज़ औक़ात, क्योंकि आप तो उनकी जाहिरी चीज देख रहे होते हो ना कि कोई बंदा मर्सिडीज से आएगा तो ओ अट्रैक्ट हो गए, बट आपको ये नहीं पता कि उसने वो मर्सिडीज कमाई कैसे. चलो अल्लाह मियां ने उसको दे भी दी, कोई मसला नहीं है, मगर वो एक ऐसा इंसान कैसा है, आप उसके साथ रह के क्या सीख सकते हो. जी जी. तो मुझे इस पे एक्चुअली एक उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कोट याद आ रहा है. I don't remember exactly and I'm going to paraphrase a lot. He basically said कि you should not make somebody, you should not say कि I know a person till you've seen him. उन्होंने कुछ चीजें बताई थी, कुछ उन्होंने कहा कि जब तक आपने उसको गुस्से में ना देखा हो, जब तक आप anyway I don't want to traveling गुस्सा and all that, yeah. that is, especially in today's time it gets very difficult. But I feel I can only speak my experience. I cannot you should. I cannot speak on anybody's behalf क्योंकि हमारी जिंदगियां सबकी इतनी different होती हैं, हमारे इतने different struggles होते हैं, इतने different struggles होते हैं हम सबके. So I cannot speak on anybody's behalf and generalize and say no, we cannot generalize. We cannot generalize. We can only talk about ourselves. If one thing I have noticed and something that Allah Ta'ala did for me is our friends sometimes are actually reflective of our lifestyle. Sometimes किसी की लाइफ में होता है ऐसा कि आपकी ह्यूमन एजेंसी is tied to, obviously आप अगर आपका एक लाइफस्टाइल है, फॉर एग्जांपल एक इंसान जो 5 वक्त मस्जिद जाता होगा, उसके हो सकता है लोग भी उसको वैसे ही मिलते होंगे. बिल्कुल. आप And one more thing, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ कि अल्लाह ताला sends you people, genuinely. अल्लाह ताला sends people your way. You cannot imagine कि इंसान का जो रिस्क होता है ना, रिस्क हम समझते हैं सिर्फ खाने से. अनफॉर्चुनेटली रिस्क आपका सिर्फ खाना नहीं है, आपकी सराउंडिंग्स. रिस्क आपका इल्म है, रिस्क आपका सस्टेनेंस है, रिस्क आपका खाना है, रिस्क आपके दोस्त हैं, आपके घर वाले हैं. बिल्कुल. It's everything. So Allah Ta'ala increases that. I'm telling you, for me it changes slowly. Things will change for anyone watching right now. I don't know what your struggles are. It could be maybe as simple as आप शायद नमाज ना पढ़ रहे हो, या आपको झूठ बोलने की आदत हो, या कुछ भी, कोई भी आपका सर्कमस्टांसेस है इस टाइम पे. just start somewhere और चीजें बदलती जाएंगी. आपका इल्म इवॉल्व हुआ, क्योंकि हर चीज आपकी लाइफ में इवॉल्व होती है.
आपकी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होती है, आपका एक्सपीरियंस इवॉल्व होता है, और जो आप कर रहे हैं it has to reflect, it cannot be आप पढ़ रहे हैं but आप उसको you're not incorporating that in your life. You have to do that and things change. Allah Ta'ala puts barakat. He puts so much barakah in your work, in your life. And I'm not just saying for myself. I can't even say how useless I am. But so many people around me who inspire me, I've seen them how they change and how much barakah Allah Ta'ala puts in their life. Your friends, and not just religiously. I'm not just saying religiously. आप देखेंगे कि आपका